Good morning, dear students. Welcome you again. Myself Bhartendu, lecturer in chemistry from BTC Government Girls Model Senior Secondary School, Nurpur. Welcomes you all in our today's topic from chapter number 2, that is solution. Its part 1 will comprise the concept of concentration and the elementary idea about the solutions. I hope you will enjoy this video. Let us start with today's topic, solutions. Let us start with our first slide, an introduction about the solution. Very well know that solutions are the homogeneous mixtures of two or more than two substances. These two substances are also called as components in the terminology of solutions. So, a homogeneous mixture of two or more than two components whose composition can be varied within certain limits is called as solution. Out of these two solutions, one which is in the small quantity is called as solute, whereas the component which is in the excess quantity is called as solvent. Therefore, the homogeneous mixture of component, that is solute and solvent, is called as solution. डियर स्टूडेंट्स, हमारी केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में ही होते हैं। इसलिए कोई भी सॉल्यूट जब किसी सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन बनता है। इसलिए सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी होने बहुत जरूरी है। कंपोनेंट ए ज़्यादातर सॉल्यूट होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जबकि सॉल्वेंट एक्सेस में होता है और इसे कंपोनेंट बी कहते हैं। Let us see the types of solutions. Depending upon the number of components present in the solution, it can be binary solution, tertiary solution, or rarely it can be quaternary solution. यदि solution में केवल दो ही component present हो तो इसे binary solution कहा जाता है। यदि solution में तीन component present हो तब इसे tertiary, और अगर चार component present हो तो इसे quaternary solution कहा जाता है। इस प्रकार के सॉल्यूशन रेयर होते हैं। हमारे प्लस टू लेवल में हम केवल बाइनरी सॉल्यूशंस के ऊपर ही ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे। इसका मतलब हमारे पास केवल दो ही कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट ए सॉल्यूट एंड कंपोनेंट बी दैट इज सॉल्वेंट, और इनका होमोजेनस मिक्सचर जो होगा उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। So let us start with the different types of binary solution. See here, I have selected only two components. One is the solute and other is the solvent, and depending upon the state of different components and the quantity of components, we have 9 different types of solutions. Let us take one by one. जैसा कि मैंने आपसे बात की कि प्लस टू में केवल हम बाइनरी सोल्यूशन के ऊपर ही स्ट्रेस करेंगे, हमारा जो सेक्शन होगा वो उसमें बाइनरी सोल्यूशन ही होंगे। सो 9 different types of solutions are as follows depending upon the state of solute and the state of solvent. The first one is called as gas in gas type of solution, and it is also called as gaseous solution. See, mixture of gases, that is oxygen and nitrogen, is the common example. Air is also another example of gas in gas type of solution. Next type of gaseous solution is the liquid in gas type of solution. See here, the gas is in large quantity and liquid is in small quantity. So humid air, clouds and all type of deodorants are the example of this type of liquid in gas type of gaseous solution. Third type is solid in gas type of solution. So smoke, dust particles in air are the example of such type of gaseous solution in which small solid particles are present in large air or the gas. Next type of solution is gas in liquid type of solution, also called as liquid solutions. All type of soft drinks, carbonated water, oxygen dissolved in pond or any water body is the example of such type of solution.
Next type is liquid in liquid type of solution. Mixture of two miscible liquids such as alcohol in water is the example of this type of solution. Next is solid in liquid type of solution. सी इस तरह का सोल्यूशन हमारी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जिसमें कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया गया हो. मोस्टली ionic compounds are soluble in water, so most of the ionic compounds such as salt or covalent compounds such as sugar which is soluble in water are the liquid solution of this type. Next type of solution is the solid solutions, in which the first category is gas in solid टाइप ऑफ सोल्यूशन. सी हमने सरफेस केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट किया था एड्जॉर्प्शन. उसमें हमने बताया था कि हाइड्रोजन गैस कैन बी एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ मैनी मेटल सच एज द प्लेटिनम. सो हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब ऑन द प्लेटिनम is an example of gas in solid type of solution. Next type of solution is liquid in solid type of solution. See, we know that mercury is a liquid metal. It can be dissolve in some solids, and the solid type of solution formed by coating or dissolving mercury in many metals such as zinc or iron is called as amalgam. Zinc amalgam is the example of liquid in solid type of solution. The last type is solid in solid type of solutions. All alloys are the example of this category. We very well know that by melting two metals and then dissolving on solidify forms the alloys. So solid in solid type of solutions again forms a solid solution. Next is the concept of concentration and the methods to express the concentration. See, मैंने अभी आपसे बात की many solids are soluble in liquids. बहुत सारे salt ionic compound वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं जिन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं. Whenever we perform some reaction in our chemistry, we always prepare solutions and all these solutions are of known concentration. मतलब जब कभी हम कोई केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमने जो सोल्यूशन बनाया है उसमें सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है. बस इसी बात को हम कंसंट्रेशन कहते हैं. So the concentration is defined as the amount of solute present in a given quantity of solution. Let us take them one by one. The first one is mass percentage. See, it is the mass percentage of the component A, that is solute, in a given solution. So mass percentage of a substance is the mass of component divided by the total mass of solution into 100, because the percentage is always calculated in 100. If WA is the weight of component A and WB is the weight of component B, then total weight of solution will be equal to WA plus WB. Therefore, if we want to find the mass percentage of A, it will be equal to WA upon WA plus WB multiplied by 100. Similarly, the second method of expression is volume percentage. The volume percentage of a component in a given solution is the volume of component A per 100 parts of the solution. If V is the volume of component A and VB is the volume of component B, then volume percentage of
A will be equal to VA upon total volume of solution, that is VA plus VB multiplied by 100. So by this method, by this way, we can calculate the volume percentage of a solution. Next way to express the concentration is parts per million. See, this term is used in that case when the quantity of solute is very small, that is very small quantity is dissolved per million part of the solution. So parts per million, ppm is, it is the part of component per million of the solution. Let W is the weight of component A and WB is the weight of component B. Then parts per million of A will be equal to mass of the component A divided by the total mass of solution multiply by 10 raised to the power 6, because 1 million is equal to 10 raised to the power 6. Now come to the more method of expression of concentration in term of moles. See, we know that number of mole can be calculated from the equation Na is equal to Wa upon Ma. If W is the weight of solute in grams and Ma is the molar mass of solute, then number of moles N will be equal to weight of substance divided by its molecular weight. So let us see how this number of mole is used to express the method of concentration. The first one is the case of molarity. Let us see this. First one is the molarity. It is defined as the number of moles of solute dissolved per liter of the solution. Again, if N is the number of moles and V is the volume of solution, then molarity will be equal to the number of moles of solute divided by volume of solution in liter. सी यहाँ पर आपने एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द 1000 to make the quantity or the expression per liter. नेक्स्ट कंसेप्ट इज मोलैलिटी. हम ये भी देखेंगे कि मोलैलिटी की जरूरत हमें क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास सेम प्रॉपर्टी, सेम मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन मोलैलिटी अवेलेबल था. बट सी द डेफिनेशन फर्स्ट. Molality, it is defined as the number of moles of solute dissolved per kilogram of the solvent. I repeat, dissolved per kilogram of the solvent. Again, if N is the number of moles of solute and Wb is the mass of solvent in kg, then molality will be equal to number of moles of solute divided by the mass of solvent in kg. ये यहाँ पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारा सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में नहीं है, then we have to multiply it with the 1000 as given in the equation. Again, the symbol for molality is small m, which you have to take importantly. Again, मैंने आपसे पहले बात की, हमारे पास मोलैरिटी और मोलैलिटी दो एक्सप्रेशन टर्म्स हैं. अगर हमारे पास मोलैरिटी अवेलेबल थी तो मोलैलिटी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? सी, out of molarity and molality, molality is better way to express the
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हमने चार्ल्स लॉ में भी देखा था, वॉल्यूम ऑफ ए गैस is directly proportional to the temperature. Similarly, for dilute solutions also, these gas laws are equally applicable. So, volume of solution may change with the change in temperature. Whereas, in case of molality, we use a term weight of solvent, and there is no relationship between weight and temperature. That is, weight is constant with the change in temperature. So, molarity of a solution may change with the change in temperature, whereas molality do not changes with the change in temperature. So molality is better way to express the concentration of solution. Next is the concept of normality. It is defined as the number of gram equivalents of the solute dissolved per liter of the solution. If gram equivalent weight of solute is expressed in gm equivalent and the volume solution is expressed in term of V, then normality is equal to number of gram equivalents of solute dissolved per liter of the solution. हमें यहाँ पर फिर से वही उसी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारा वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा, then we have to multiply it with 1000 to convert the equation in volume per liter. हम यहाँ पर फिर से देखेंगे कि नॉर्मलिटी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास मोलरिटी और मोलरिटी ऑलरेडी अवेलेबल थी, और साथ में ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड किया जाता है। लेट अस सी हाउ दिस इक्विवेलेंट वेट इज कैलकुलेटेड। हमें नॉर्मलिटी की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जब वहाँ पर हमारे एसिड बेस की टाइट्रेशंस हो और जहाँ पर ये दोनों इन्वॉल्व होते हो। सी, जब कभी भी एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम एक्सप्रेस करते हैं एसिडिटी में, जबकि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन को हम एक्सप्लेन करते हैं उसकी बेसिसिटी से। सो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस विल बी इक्वल टू द मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ H आयंस, और इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ OH आयंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं वहां पर इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइसिस के बराबर गिने जाते हैं। नॉर्मलिटी की आवश्यकता में उन रिएक्शंस में पड़ती है जहां पर हमारी एसिड बेस टाइट्रेशंस देखी जाती हैं। अदरवाइज मोलरिटी और मोलरिटी इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस द मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। नॉर्मलिटी को हम ज्यादातर एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज करेंगे। One more method to express the concentration is in term of mole fraction. See, for the complicated reactions involving the solutions, we use the term mole fraction. Mole fraction, it is the ratio of the numbers of moles of one component to the total number of moles of both solute and solvent present in the solution. If Na is the number of moles of solute and Nb is the number of moles of solvent, and Xa is the mole fraction of solute and Xb is the mole fraction of solvent, then Xa is equal to Na upon total number of moles of both solute and solvent, Na plus Nb. Similarly, Xb will be equal to Nb upon Na plus Nb। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों का सम Xa और Xb दोनों का सम एक से बढ़कर नहीं होता। दैट इज द वैल्यू ऑफ Xa प्लस Xb इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिट।
सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हमने आज के लेक्चर में देखा different type of solution on the basis of state of the solute and solvent, and second we have seen about the method to express the concentration of solution. We have seen the mass percentage, volume percentage, parts per million, molality, normality, and in the last we have seen the mole fraction of solute. मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छी तरह समझ आ गई होंगी, क्योंकि जब कभी भी हम कोई भी रिएक्शन डील करते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म को अंडरस्टैंड करना या इसका ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है। इसके साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस ऑनलाइन लेक्चर का आनंद आया होगा। बिफोर आई कंप्लीट, आई वांट टू थैंक माय वर्दी प्रिंसिपल श्रीमती चंद्ररेखा, श्री देवेंद्र सर, मुकेश जी, गगन जी, संदीप सर. All of them have provided me the valuable feedback and the suggestions to improvise my lecture. I again thanks you all and have a nice day.